Assalamualaikum student, welcome to the third session of week 8. We were on Gantt chart. Basically, we have discussed about basic 2 to 3 concepts. That was about techniques for allocating the resources, in which first one is about budgeting. सबसे पहला budgeting हमने discuss किया और improve कैसे करते हैं overall budgeting को, scheduling कैसे करते हैं. In scheduling, we have 3 basic type like Gantt chart. Another one is about load chart and PERT network analysis. So these are the and break-even analysis. So these are the major types that we have to discuss in overall. These are the basic types that we have to discuss in scheduling. Now we have discussed about the Gantt chart overall, the way you have to plan about each and everything. आप लोग इससे go through हो जाइएगा. Load charts. A load chart is a modified Gantt chart as well. This is another way of Gantt chart. Instead of listing the activities on the vertical axis, load chart lists either entire department or specific resources. अच्छा जी, हम जो Gantt chart था उसमें हम specifically we were like हम बात करते थे activities के point of view से. While in load chart we have to discuss about the department and specific resources. जो x-axis के vertical axis में हमने जिसको रिप्रेजेंट करेगा या जो शो ऑफ करेंगे हम, या एक वर्टिकल एक्सिस में हम जिसको लिस्ट डाउन करेंगे, दैट इज अबाउट जनरली एक्टिविटीज जो है वो गैंट चार्ट में होती थी, बट लोड चार्ट में इट्स अबाउट स्पेसिफिक रिसोर्सेज एंड ओवरऑल डिपार्टमेंट. So this arrangement allows the manager to plan and control the capacity utilization. In other words, load chart schedule the capacity by work area. So generally what will be the arrangement? The arrangement allows the manager to plan and control the capacity utilization. Overall capacity utilization ke point of view se, the manager has to plan and make it possible. In other words, load chart schedule capacity by work areas. So generally जो आपका load chart है, that will be used to schedule the capacity by working areas, जो आपके specific work areas या departments होते हैं उसके point of view से. This one is the example. Like in load chart shows 6 production editor at the same publishing company. Each editor supervises the production and design of several books. We have almost 6 what we can say production editors, right? They are going to edit and publish the books. So the number of books they have, and everyone is responsible for designing of the different books. By reviewing the load chart, and executive editor who supervises the 6 production editor can see who is free to take on a new book. If everyone is fully scheduled, that means it's about your loading capacity कि आप already कितना काम कर चुके हैं. और just like if we have given, एक तो ये example है कि everyone is responsible for production and what we can say designing and editing of different books. So already एक बंदा जो है वो एक supervisor या एक editor already is overloaded. उसके पास 6 या 20 या 30 जो भी आपकी specific number of books हैं वो हैं. So then you have to go for another one. Another one is already busy. Then you have to go for another one. So on the basis of that load chart, we can find out कि किसके पास load कम है तो हम उसको load shift कर सकते हैं. So to accept new projects and delay other, to make the editor work overtime or to employ more production editor. वो कह रहा है कि if you have number of projects, if you have number of books and everyone is busy, so you have to see कि overtime लगाना पड़ेगा या new आपके editors आपको hire करने पड़ेंगे या उन्हीं को किसी तरीके से manage करना पड़ेगा. That can be possible. This scheduling and this decision can be possible because of load chart. So scheduling for the next 6 months, that can be possible because of load chart, and other editor have some unassigned time and might be able to accept new project or be available to help other editors who get behind. So this is how they can manage their work. कि जो पीछे रह गया उनको manage कर सकता है, like Annie, Anthony, Kim, and these are the different name of the different editors, and everyone is busy over here.
दिस वन इज द वर्क स्केड्यूल। यहाँ पे वर्क स्केड्यूल है, यहाँ पे थोड़ा उनका लोड कम है, फिर यहाँ पे है ही इज कंप्लीटली बिजी, ही इज बिजी ओवर हियर 4th 5th 6th मंथ में। फर्स्ट 3 मंथ में ये वाला जो है वो आपको अकोमोडेट कर सकता है। तो पहले मंथ में आप ज्यादा काम इससे करवाएं, इससे भी करवा सकते हैं, इधर से भी करवा सकते हैं, इधर और इधर से करवा सकते हैं, लेकिन आखिरी मंथ में ही वेरी बिजी, तो यू कैन गो फॉर, आप लास्ट मंथ में इधर चले जाएं और इस वाले सेशन में यू कैन गो फॉर दिस वन, बिकॉज इस वाले एडिटर के पास ब्लैंक पेज होगा, एंड इट माइट पॉसिबल वो अपने काम के साथ ही कैन मैनेज another work as well. So this is how you can manage. That means overall आपकी loading capacity of your work you can identify through load chart. कि अगर already आपके पास सबको 20 books दी हैं कि you have to read all these books or you have to make the assignments, तो कुछ लोग आप में से जल्दी कर लेंगे, तो through load chart we can come to know कि okay कितने लोग जो है वो कितना काम कर चुके हैं और कितनी बुक्स रहती हैं, या जैसे प्रोजेक्ट्स एलोकेट किए जाते हैं तो हर सुपरवाइजर से हम पूछ सकते हैं कि कितने प्रोजेक्ट हो चुके हैं, कुछ जल्दी करवा देंगे, कुछ के स्टूडेंट्स अच्छे होंगे, जो नहीं होंगे तो दे हैव टू टेक टाइम, कुछ सुपरवाइजर के डिफरेंट इश्यूज हो सकते हैं, डेफिनेटली देयर नंबर ऑफ रीजंस, सो यू हैव टू सी, वो सारी चीजें आपने देखनी है और उससे आप यू कैन एनालाइज ऑल दीज थिंग्स और अकॉर्डिंगली स्केड्यूलिंग कर सकते हैं, जो जनरली हम डेली लाइफ में भी ये कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। PERT नेटवर्क एनालिसिस, गैंट एंड लोड चार्ट आर यूजफुल एज लॉन्ग एज द एक्टिविटीज बीइंग स्केड्यूल्ड। वो कह रहा है कि गैंट एंड लोड चार्ट के अंदर व्हाट्स द बेसिक थिंग, दैट मीन्स फॉर scheduling the activities it's very much useful, and scheduled are few in number and independent of each other. But what if a manager had to plan a large project such as departmental organization, the implementation of a cost reduction program, or the development of a new product that required coordinating input from marketing, manufacturing, and product design? So वो कह रहा है कि but what if a manager had to plan a large project? Generally तो for small project, few number of individuals or activities के लिए you can go for Gantt and load chart. But if you want to evaluate and you want to go for the large project in the different departments of the organization and implementation of cost reduction program अगर हो effective और efficiency के base पे, और development of new product हो, required coordination input from the marketing, manufacturing and product design, overall अगर का एक huge level पे हो, तो then you have to go for something else. That means फिर आपका Gantt और load chart नहीं होगा, फिर आप किसी और टेक्निक को यूज करेंगे, and what will be the technique and for what reason we can use that technique, like what we can say, such project require coordinating 100 and even thousands of activities, right? जो आपके generally different आपकी activities हैं, that is about 1000 or 100 of activities if you have, some of which must be done simultaneously and some of which cannot begin until preceding what we can say, until preceding activities have been completed. So generally simultaneously if you have to manage number of activities, so you have to see कुछ जो है वो आपने start कर दी हैं, कुछ आपकी manage हो जाएंगी और कुछ आपकी later on you have to you can manage. So what we can do is like such project required coordinating 100 and even thousands of activities. So some of which must be done simultaneously and some which begin until preceding activities have been completed. साथ साथ आप कर सकते हैं और कुछ 100 of activities को आगे पीछे होके आप manage करते हैं. If you are constructing a building, you obviously cannot start putting up this walls until the foundation is laid down. So that means अगर जब तक आप एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करते हो, तो जब तक आप एक फाउंडेशन नहीं बनाते, उसकी बेस नहीं बनाते हो, इट्स नॉट पॉसिबल कि आप वॉल्स बनाना स्टार्ट कर दो. So one step by step you have to go through from the all of the activities. So इसी तरह कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट है तो उसको भी आपने स्टेप बाय स्टेप लेके चलना है, and that is the responsibility of manager or what we can say supervisor or team lead कि वो कैसे चीजों को लेके चलता है. How can manager schedule such a complex project? So for that reason what we have to use, जब हमारे पास बहुत सारी चीजें, बहुत सारे ways होते हैं और उसमें then we have to take the right decision. So the program evaluation and review technique is a highly appreciated for such project. So PERT is one of the best example for you can say program evaluation and review technique for
such type of very huge projects, जिसमें number of activities we have to perform one after another. A project management tool in which the stages of a project are graphically represented on a chart. This is known as PERT chart, and this one is the example. Like PERT network is a flowchart diagram that depicts the sequence of activities needed to complete a project and the time or cost associated with each activity. So with a PERT network, a manager must think through what has been done. So generally, PERT mein what we have to see, what are the activities, what will be the cost, and what will be the time, in what time period you will be able to complete your task. तो ये सारी चीजें हम एक डायग्राम के थ्रू इसको रिप्रेजेंट करते हैं, और we can come to know okay, this is how we can get the output in that specific time period and with that specific cost and with that specific activity, और उसका इतना time लगेगा. With a PERT network, a manager must think through what has to be done, determine which events depend on one another, and identify potential trouble spots. PERT also make it easy to compare the effects alternative actions might have on scheduling and cost. So generally, PERT also make it easy to compare the effects alternative actions might have on scheduling and cost. That means generally, जो आपका PERT है, it make it very easy to compare the effects alternative actions might have on scheduling and cost. कि overall आपकी जो है वो how you can make the comparison of different alternative, whatever the actions you are going to take, and how you have to schedule all these actions. कि अच्छा ये मुझे 4 दिन में ये activity ये action perform हो रहा है और ये 3 दिन में हो रहा है, तो whether we have to go for this one या ये 2 दिन में है और ये 1 दिन में है, तो ये total 3 days या 4 days बन रहे हैं, तो ये वाला सिलेक्ट करेंगे, ये वाला करेंगे या ये वाला करेंगे. So this is what we can identify in overall network PERT network technique, right? So this is how we can find out whether we have to go for this one or some another action or what we can say a responsibility. Okay, PERT के point of view से there are certain things I just want to go through from that lesson plan. तो मैंने कहा ये भी यहाँ पे ही चीजें हैं, उसमें आपकी स्लाइड में मेंशन नहीं है. So PERT allows the manager to monitor the project progress, identify the possible bottleneck, and shift the resources as necessary to keep the project on schedule. So generally what you can do is PERT it allows the manager to find out the project progress, identify the possible bottleneck, and find out the necessary to keep the project on schedule. So to understand how to construct a PERT network, what they have to do is you need to know 4 terms. Now, what are the 4 basic terms? That is about events, it's about activities, slack time, and critical path. Now, what is event? Event generally, जो अभी हम बात कर रहे थे, that is about your activities. It's about your different actions that you are going to perform. And another one, so events are the end points that represent the completion of the major activities. तो जो आपके एंड पॉइंट्स होते हैं वो आपके क्या हैं, इवेंट्स होते हैं. एक्टिविटीज रिप्रेजेंट द टाइम और रिसोर्सेज रिक्वायर्ड टू प्रोग्रेस फ्रॉम वन इवेंट टू अनदर. सो एक्टिविटीज क्या होती हैं? इट्स अबाउट द प्रोग्रेस फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर. दैट इज अबाउट एक्टिविटी कि आप एक पॉइंट से दूसरे. स्लैक टाइम इज द अमाउंट ऑफ टाइम एन इंडिविजुअल एक्टिविटी कैन बी डिलेड विदाउट डिलेइंग द होल प्रोजेक्ट. कि ओवरऑल आपका जो एक टाइम है, एक अमाउंट ऑफ टाइम है of the individual activity that will be delayed without delaying the overall project time. कि आप सपोज 10 दिन में भी कर सकते हैं, 5 में भी, लेकिन अगर 10 दिन में आप ये वाला स्पेसिफिक एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे तो उससे अगले वाली जो एक्टिविटी है उसका टाइम पीरियड खुद ही कम हो जाएगा. तो प्रॉपर जो पूरा आपके प्रोजेक्ट का टाइम है वो डिले नहीं होगा. तो इसको हम स्लैक टाइम कहते हैं कि जो आपका ज्यादा टाइम अगर आप ले रहे हैं जस्ट टू कंप्लीट दैट, डिले टाइम जो है जस्ट टू कंप्लीट दैट स्पेसिफिक event. The critical path is the longest or most time consuming sequence of event and activities in a PERT network. Critical path क्या होता है जी? Critical path होता है कि सपोज यहाँ से लेके यहाँ तक आप जा रहे हैं और ये सबसे लॉन्गेस्ट पाथ है, लेकिन आप इसी पाथ को चूज करके जो है वो जाते हैं, तो वो आपका क्रिटिकल पाथ है. व्हाई यू हैव टू गो फॉर दैट स्पेसिफिक पाथ? वो क्यों चूज करते हैं? व्हाट्स द बेसिक रीजन? उसको जो है वो डेफिनेटली हम क्रिटिसाइज करते हैं. वी कैन क्रिटिसाइज ऑन दैट स्पेसिफिक पाथ. So that is the reason it's known as critical path.
So any delay in completing the events on this path would delay completion of the entire project. जनरली स्लैक टाइम में अगर डिले होता है तो वो ओवरऑल प्रोजेक्ट को अफेक्ट नहीं करता, लेकिन क्रिटिकल पाथ में अगर डिले होगा तो वो ओवरऑल प्रोजेक्ट को अफेक्ट करेगा, इसलिए हम इसको क्रिटिकल पाथ कहते हैं। जनरली तो डिले टाइम स्लैक टाइम है, बट जो आपके पास एक एक्स्ट्रा टाइम आप एक इवेंट को परफॉर्म करने के लिए एक स्पेसिफिक लाइक डिजाइनिंग कर रहे हैं, डिजाइनिंग 4 दिन में होनी थी, आप 10 दिन में करते हो, 6 दिन आप एक्स्ट्रा लेते हो, तो ये आपका स्लैक टाइम है। लेकिन प्रोजेक्ट आप 1 मंथ में कर लेते हो। लेकिन क्रिटिकल पाथ कह रहा है कि आपने 10 या 15 दिन दे दिए हैं डिजाइनिंग के अंदर, और उसकी वजह से हमारा 15 दिन आगे हो गया प्रोजेक्ट, जो हमने 1 मंथ में सबमिट कराना था वो 1.5 में करा रहे हैं। तो इसलिए वट एवर यू हैव डन, whatever the you can say जिसको हम कह सकते हैं ना, क्रिटिकल पाथ इज द लॉन्गेस्ट एंड मोस्ट टाइम कंज्यूमिंग सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। बेसिकली है क्या, इट्स अबाउट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, कि वो उस टाइम के अंदर जितने भी आपने इवेंट्स सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स परफॉर्म किए हैं और एक्टिविटीज परफॉर्म की हैं, उन सबको हम कहेंगे, क्रिटिसाइज करेंगे कि व्हाई यू हैव टेकन दैट टाइम, आपने इतना टाइम क्यों लिया है, and they have to, that person has to justify definitely. So that path is about known as critical path. Any delay in completing event on this path, that will affect the delay in project as well. In other words, activities on the critical path have zero slack time, right? That means slack time ये होता है कि आपके project को affect ना करे, इसमें तो project को affect करता है, that's why it's about zero slack time. PERT network for constructing an office building, so ये different examples दी हुई हैं, एक्सपेक्टेड टाइम है, प्रीसीडिंग इवेंट्स एंड ऑल दैट, ये सारी चीजें आपको टर्न ओवर टू द बिल्डिंग मैनेजमेंट, ये एक्सपेक्टेड टाइम है और प्रीसीडिंग इवेंट ये है। तो उसकी बेस पे वी कैन मेक द डायग्राम, जो आपकी यहाँ पे डायग्राम ये बन रही है। अभी मैं आपको नेक्स्ट सेशन के अंदर इसकी डिफरेंट डायग्राम्स बताती हूँ, जिसमें इवेंट एक्टिविटीज के पॉइंट ऑफ व्यू से और स्लैक टाइम और जनरली डिफरेंट एग्जांपल्स के थ्रू हम क्रिटिकल पाथ के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कशन करेंगे। So thank you so much for this session, class, for third session of 8th week. अभी हम next session में इसको डिटेल में और नेक्स्ट वाले टॉपिक को डिस्कस करते हैं। Thank you so much, class.